A physical quantity consists of a magnitude and a unit. Perfect. A physical quantity is something that consists of a magnitude and a unit. Perfect. Which row does not show a correct combination of a quantity and its unit? Okay. Mass का unit gram. Hmm. Still the unit is correct. Length का unit मीटर. चलो. चार्ज का यूनिट एम्पियर. ओहो, दिस इज completely wrong. चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा? कैल्विन. सॉरी, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. चार्ज का यूनिट इज कूलम. आई वाज रीडिंग पार्ट डी, सॉरी माय बैड. चार्ज का यूनिट इज कूलम, सो दिस इज इनकरेक्ट. सी इज योर आंसर. भाई आपने इनकरेक्ट देखना है बेटा, इनकरेक्ट वाली चीज़ देखनी है. इनकरेक्ट वाली चीज़ क्या है? तो इनकरेक्ट वाली चीज़ इज चार्ज का यूनिट इज कूलम एंड यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है. मास शुडंट बी इन किलो. देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है बेटा? एंड इट्स यूनिट. यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है एसआई बेस यूनिट? यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है एसआई बेस यूनिट? नो. अगर एसआई बेस यूनिट होता तो मास भी गलत होता. बिल्कुल सही कह रहे हो. बट यहाँ पे एसआई बेस यूनिट कहाँ लिखा हुआ है बेटा? एसआई बेस यूनिट तो लिखा हुआ ही नहीं हुआ. आपने सिर्फ यूनिट्स के बारे में जिक्र करना है. ठीक है. A car travels in a town. Perfect. What is the reasonable estimate of the kinetic energy of the car? अब ये मैंने estimations के document में लिखवाया हुआ है. The kinetic energy of a car is equals to 5 into 10 is the power of 4 joules. चलो, let's further move ahead. A solid bar has a square cross section. Its length is measured as this and its width is measured as this. These values are used to calculate the volume of the bar. Perfect. What is the percentage uncertainty in the calculated volume? बेटा थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा फोकस करो. A solid bar has a square cross section area. Its length is measured as this and width is measured as this. So basically, what will be the volume of this bar? Area into the width. Area क्या होगा? Length into length into width. Perfect. Can you realize कि लेंथ का वेरिएबल आप टू टाइम्स यूज कर रहे हो? यस. व्हाट विल बी द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम? Percentage uncertainty in the volume will be 2 times the percentage uncertainty of length plus the percentage uncertainty of width. Perfect. Can you calculate the percentage uncertainty of length? Yes. What is the absolute uncertainty in length? 0.2. What is the actual value of length? 50 multiplied by 100. Plus, what is the absolute uncertainty in width? 0.01. What is the actual value of width? 2 multiplied by 100. What does your answer come out to be? By zero point 0.2 divided by 50 into 100, take care, multiplied by 2. This comes out to be 0.8 plus. This will be what? Plus this will be 0.01 divided by 2 into 100. This comes out to be 1.3%. ये 0.5 है. D will be your answer. Simple as that. Nothing complicated. 3 का answer is D. Let's further move ahead. The graph shows how the acceleration of an object moving in a straight line varies with time. बेटा ये acceleration versus time graph आपको given है. Perfect. The object starts from rest. Perfect. Which graph shows the variation of the velocity of the object with time? Okay, what is the velocity time graph? This is the acceleration time graph. You have to calculate the velocity time graph. Can you see initially the acceleration is increasing? Can you see initially the acceleration is increasing? Yes. And we know that the gradient of velocity time graph is equals to acceleration. If acceleration is increasing, that means gradient of velocity time graph will increase. Hence, you will have an increasing curve for the first half. Perfect. Let me mark this with blue. Hence, you will have an increasing curve for the first half. Perfect. For the second half, can you see that acceleration time graph is decreasing? For the second half, can you see the value of acceleration is decreasing? Yeah, that means the gradient of
Velocity time graph decreases as acceleration decreases. If your gradient of velocity time graph is decreasing, you will draw a decreasing curve. How will your decreasing curve look like? Somewhat like this. A is your answer. Simple as that. All clear? Yes, बेटा यहाँ तक clear है चीज़ें. A stone falls vertically from rest. Perfect. Air resistance is negligible. Okay. So you have initial velocity is 0. Air resistance is negligible. So that means acceleration is 9.81 ms minus 2. Perfect. What is the speed of the stone when it has fallen through a distance of 0.4 meters? SB आपको given है. Let's say this is your ball. And let's say it starts falling. It reaches this point. Distance is 0.4 meters. Initial speed is 0. Acceleration is 9.81 ms minus 2. You have to calculate the final speed. How can you calculate the final speed? Any ideas, beta? किस तरह calculate करोगे final speed? You will apply v square is equals to u square plus 2as. V square is equals to what? U square, that is 0 square plus 2 into the acceleration, that is 9.81, multiplied by the distance, that is 0.4. Velocity comes out to be what? 2 into 9.81 into 0.4. What is your answer of velocity? Calculate करो बेटा क्या आता है. अच्छा आपका आंसर भी आ रहा है. Let me calculate this as well. Yeah, the answer is V. 2.8 ms minus 1 is your answer. Let's further move ahead. A ball is thrown horizontally off a tall building. Okay. So whenever this keyword of horizontally is written, whenever this keyword of horizontally is written, what does this mean? Half projectile motion. Whenever this keyword of horizontally is written, this means what? Half projectile motion. Simple as that. अच्छा, a ball is thrown horizontally. ठीक हो गया. A ball is thrown horizontally, that is half projectile motion. The ground is horizontal, air resistance is negligible. Perfect. Which statement about the motion of the ball is correct? Okay, which statement about the motion of the ball is correct? The acceleration of the ball is always at right angles to the path of the ball? No. Acceleration तो हमेशा downward act करेगी. The ball follows a circular path until it hits the ground? No. The ball has a constant acceleration. Yeah, this could be correct. C could be correct. Why? Because your air resistance is negligible. If your air resistance is negligible, your acceleration is what? 9.81 ms minus 2. This remains constant. C could be your answer. And C is your answer in the marking scheme as well. Let's move on to question 7. Let's see this. The moving object strikes a stationary object. Perfect. The collision is inelastic. Okay, the collision is inelastic. Please remember this. The object moves off together. Assume that the two objects form an isolated system. Okay. Which row shows the possible values of total momentum and total kinetic energy for the system before and after the collision? ठीक है. You have to tell what will be the total momentum before collision and after collision. You also have to tell what will be the total kinetic energy before collision and after collision. So if you are a little smart बेटा, ऑप्शन ए तो आप फौरन से कैंसिल कर दोगे. Because in any kind of system, either inelastic or elastic, बेटा either आपका collision inelastic हो और elastic हो, your total momentum before collision is equals to total momentum after collision. Simple as that. So A will get cancelled out. Okay, what happens in inelastic collision बेटा? Inelastic collision में आपकी kinetic energy before collision is greater than the kinetic energy after collision. So let's look for an option like that. D तो नहीं होगा. Why? Because यहाँ पे दोनों की kinetic energy same है. This is not true for inelastic collision. C is a correct answer. Your kinetic energy before collision is 90. After collision is 30. C is your answer. Let's wait then move ahead. Okay, let's see this. The graph shows how a quantity y varies with a quantity x. Perfect.
For an object falling vertically at its terminal velocity towards the surface of the earth. Perfect. So you are falling at terminal velocity. This is the graph of y versus x. Which quantities could represent y and x? Okay, which quantities could represent y and x? Can x-axis be the time? Yeah, it can be the time. Can y-axis be the acceleration? No. If you are falling at terminal velocity, your acceleration will be zero. A gets cancelled out. Okay. Can x-axis be the time and y-axis be the height above the surface? Yeah, this is possible. And height is decreasing at a constant rate. Why? Because the gradient of distance time graph is equals to velocity, and your velocity is a constant value, so your gradient is also constant. You have a line like this. Simple as that, nothing complicated. Let's further move ahead. A ball of mass 2 kg travels horizontally with a speed of this. Perfect. The ball collides with the wall and rebounds in the opposite direction with a speed of this. The time of collision is this. What is the average force? बेटा आपने average force निकालनी है. इससे simple सवाल हो नहीं सकता. Let's say this is your wall. Okay. This is your ball of 2 kg and it hits the surface at a velocity of 4 ms minus 1. It rebounds at a velocity of what? 2.8 ms minus 1. You have to calculate the force. Force is equals to what? Change in momentum over change in time. What will your change in momentum be equal to? Mass into change in velocity. What is your change in velocity? Let's say the left side velocities are negative, positive, the right side velocities are negative. How can you calculate the change in momentum? Mass into change in velocity over change in time. Perfect. Now, what is the change in velocity? Very, very easy to calculate. 2 multiplied by the final velocity minus the initial velocity that is acting towards the right divided by the change in time that is 150 milliseconds. Can you calculate the answer beta? क्या आता है आंसर इसका? 2 into 6.8 divided by 150 into 10 raised to the power of minus 3. This gives you a value of 90.6. D is your answer. समझ आई बेटा इस सवाल की? Yes or no? Do you get it? What I did here? Two trains, uh, two trains carrying mass of 500 kg roll, uh, roll towards one another on a horizontal frictionless track. One is traveling at a speed of this, the other is traveling at a speed of this. At as shown, okay. They collide and join together. What is the kinetic energy lost during the collision? Perfect. आपने kinetic energy lost during the collision निकालनी. First of all, you will apply principle of conservation of momentum here. First of all, you will apply principle of conservation of momentum here. Momentum before collision is equals to momentum after collision. बेटा before collision क्या momentum होगा? And let's say the velocities towards the right are positive, the velocities towards the left are negative. So momentum before collision will be what? 5000 into 2 minus 5000 into 1, क्योंकि ये velocity 1 वाली negative की side पे. After collision, both of them combine. The mass become 10,000. The velocity is v. 5,000 divided by 10,000 is equals to your velocity. Velocity comes out to be 0.5 ms minus 1. Simple as that. So after collision beta, दोनों की velocity क्या हो गई? 0.5. Now let's calculate the kinetic energy before collision. The kinetic energy before collision will be what? 1 upon 2 into the mass, that is 5,000, into velocity ka square, plus 1 upon 2 into 5,000 into velocity 1 ka square. Can you calculate the answer? Yes, very, very easy. The answer comes out to be 12,500 joules is your kinetic energy before collision.
What is your kinetic energy after collision? Beta 1 upon 2 into the mass, that is 10,000, multiplied by velocity, that is 0.5 square. Can you calculate this answer? 0.5 square into 10,000 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, मुझे समझ आ गया गलती क्या की है तुमने भाई। आपने काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन दे दी है बेटा। आपको काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन थोड़ी देनी है। यू हैव टू गिव द लॉस। You have to give the loss of kinetic energy. So you will say 12,500 minus 1,250. What will your answer be? 11,250 joules. Simple as that. Let's further move ahead. Which single condition must apply for an object to be in equilibrium? कौन सी condition must apply for an object to be in equilibrium? The resultant force must be equal to 0. Let's further move ahead. अ काइट, ओह वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है, देखो। अ काइट इज इन इक्विलिब्रियम एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एज शोन, परफेक्ट। एक काइट है इक्विलिब्रियम में एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एज शोन, परफेक्ट। द काइट हैज थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, द वेट, द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एंड द फोर्स फ्रॉम द विंड। ठीक है, फोर्स फ्रॉम द विंड भी इस पे लग रही है। विच वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंट्स द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द काइट? बेटा ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप इक्विलिब्रियम में होगे, आप क्या बनाओगे? वेक्टर डायग्राम। एंड whenever you have a resultant force, you will draw the resultant vector वाली चीज जो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते थे। लेट मी स्पेसिफाई इट एज वेल। बेटा वेक्टर ट्रायंगल में क्या होता है? वेक्टर ट्रायंगल में अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, लेट्स से वेक्टर ट्रायंगल में अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं इस तरह, तो ऑल ऑफ द एरोज विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स ईच अदर। इस तरह सारे एरोज एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे ना वेक्टर ट्रायंगल, बिकॉज यू आर इन अ इक्विलिब्रियम। However, for the resultant force, what will happen? Let's say this is force F1. Let's say this is force F2. How do you make the resultant vector? Resultant vector आप इस तरह बनाते हो कि टेल से लेकर हेड तक, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। सिंपल एज दैट। वेक्टर ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल द एरोज पॉइंट टुवर्ड्स ईच अदर। रिजल्टेंट में क्या होता है भाई? योर एरोज विल पॉइंट टुवर्ड्स द हेड एंड द टेल। सिंपल। अच्छा, ये वेक्टर ट्रायंगल है बेटा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये वाला एरो और ये वाला एरो इज नॉट कोइंसाइडिंग, सीक्वेंस नहीं बना रही है, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी में भी यही मसला है, इसका हेड और इसका हेड कोलाइड कर रहा है। वेक्टर ट्रायंगल में बेटा हमने क्या देखा है? एक का हेड दूसरे की टेल, एक का हेड दूसरे की टेल, एक का हेड दूसरे की टेल, सारे सीक्वेंस में लगे होते हैं। तो सीओडी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अब वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी बेटा? अवे। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे। तो ऑप्शन ए और बी में टेंशन कौन सी है एक्टिंग अवे? ए इज योर आंसर। सिंपल एज दैट। समझ आ गई बात? वाई इज ए द आंसर? लेट्स सी दिस। फोर फोर्सेस एक्ट अबाउट अ पॉइंट पी एज शोन। ठीक है। द फोर्सेस एक्ट इन द सेम प्लेन एंड प्रोड्यूस नो रिजल्टेंट मोमेंट। अच्छा, नो रिजल्टेंट मोमेंट का मतलब क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट पी, परफेक्ट। What is the length xy? You have to calculate this length xy. अच्छा, ये लेंथ xy किस तरह निकलेगी? वेरी 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 इजी। जस्ट फोकस, थोड़ा सा फोकस करना है हमने, ठीक है। अच्छा, यस, देयर इज नो रिजल्टेंट मोमेंट। ठीक हो गया। इफ यू लुक क्लोजली, ये 6 न्यूटन की फोर्स क्या करेगी बेटा? क्लॉकवाइज रोटेट। ये 6 न्यूटन की फोर्स क्लॉकवाइज रोटेट। अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो ये जो 6 न्यूटन की दो फोर्सेस हैं, ये क्या है? दिस इज अ टॉर्क। ऑफ अ कपल। ये 6 न्यूटन की फोर्स, ये 6 न्यूटन की फोर्स, दिस इज अ कपल। हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ अ कपल और द क्लॉकवाइज टॉर्क? क्लॉकवाइज टॉर्क किस तरह निकालोगे? एक फोर्स लोगे,
मल्टीप्लाई करोगे बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। फोर्स क्या है भाई 6, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 7 + 3 दैट इज 10। योर टॉर्क कम्स आउट टू बी 60 न्यूटन मीटर। ओके, नाउ इफ यू फोकस, ये 5 न्यूटन वाली फोर्सेस भी तो एक कपल है बेटा। ये 5 न्यूटन वाली फोर्सेस भी एक कपल है, एंड दे विल रोटेट योर ऑब्जेक्ट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किस तरह निकालोगे? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द फोर्स दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अच्छा जी, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस किस तरह आएगा? वेरी 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 इजी, थोड़ा सा फोकस करना है हमने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू 5 न्यूटन की फोर्सेस, कौन सा डिस्टेंस है भाई? ये वाला डिस्टेंस। दिस वाला डिस्टेंस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस ब्लू डिस्टेंस? ये ब्लू डिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट हो सकता है? डी किस तरह कैलकुलेट हो सकता है? दिस एंगल इज 60 डिग्री। परफेक्ट। लेट्स से दिस एंगल इज, दिस पूरे रॉड की लेंथ, बेटा इस पूरे रॉड की लेंथ लेट्स से कह लो एक्स है। परफेक्ट। एंड लेट्स से दिस इज 90 डिग्री। कैन यू अप्लाई सम रेशियो हेयर? यस। साइन 60 is equals to perpendicular divided by hypotenuse। x sin 60 is equals to your d। तो ये आपका डिस्टेंस डी आ गया, मल्टीप्लाई कर दो x sin 60, सिंपल। अब आप क्या करोगे? क्लॉकवाइज टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल कर दो। क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है 60, एंटी क्लॉकवाइज क्या है 5x sin 60। x किसके इक्वल आ जाएगा भाई? 60 डिवाइडेड बाय 5 sin 60। लेट्स कैलकुलेट इट, क्या आता है? 60 divided by 5 sin 60. Oh, this comes out to be 13.8, that is around about 14 meters। C is your answer। समझ आइए सवाल की बेटा। A rectangular block of lead density this has sides of this. What is the maximum pressure the block can exert when resting on a table? बेटा जब भी आपने मैक्सिमम प्रेशर निकालना है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लो ये ब्लॉक किस तरह का है। ये बहुत ही ओ लेवल्स का सवाल है, बेसिक ओ लेवल्स का। लेट्स से ये आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है? ये एक क्यूबॉइड है, इसकी डिफरेंट लेंथ्स है इस तरह, इस तरह, ठीक है? दीज आर योर डिफरेंट लेंथ्स। ओके, द लेंथ इज 12 हेयर, द width इज लेट्स से 15 हेयर, और बैकवर्ड साइड 10 होगी, ठीक है? सो ये एक क्यूबॉइड है। अब आपने मैक्सिमम प्रेशर निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर। अब बेटा मैक्सिमम प्रेशर किस तरह आएगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। मैक्सिमम प्रेशर जब आएगा जब आपका एरिया मिनिमम होगा। अब एरिया मिनिमम कब हो सकता है बेटा? एरिया मिनिमम कब हो सकता है? जब आप 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाला फेस बॉटम पे रखो। ओके, तो रख देते भाई। तो आपका एरिया मिनिमम कैसे हो सकता है? योर एरिया इज मिनिमम if you take 12 and 10 सेंटीमीटर। परफेक्ट। अच्छा, फोर्स किस तरह निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट द फोर्स? यू नो द डेंसिटी, सो यू नो द डेंसिटी, द फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट। वेट किसके इक्वल होता है भाई? मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। In O levels IGCSE physics, we have studied that mass is equals to what? Density into volume into gravitational field strength। डेंसिटी क्या है बेटा? 1.13 इंटू 10⁻⁴। वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 12 इंटू 15 इंटू 10। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है भाई? 9.8। कैन यू कैलकुलेट द वेट हेयर? सर यस। ये इसमें सीएम को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे? हाँ हाँ, करेंगे करेंगे करेंगे, लेट्स डू दैट एज वेल। यस, सही कह रहा हूँ। दिस डिवाइडेड बाय 100, लेट्स डिवाइड दिस बाय 100, लेट्स डिवाइड दिस बाय 100। चलो इसको कर देते हैं कन्वर्ट। 1.13 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.12 से, मल्टीप्लाइड बाय 0.15, मल्टीप्लाइड बाय 0.1, एंड मल्टीप्लाइड बाय 9.81।
दिस गिव्स यू एन आंसर ऑफ वेट क्या आ रहा है 199.5 न्यूटन। दिस इज योर वेट। और ये वेट आपका फोर्स होगा। सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर। इसको अब हम रख देते हैं यहाँ पे। अब प्रेशर निकाल लेते हैं भाई। व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रेशर? द फोर्स दैट इज 199.5 डिवाइडेड बाय द मिनिमम एरिया, 0.12 into 0.1. Let's calculate this answer divided by 0.12 into 0.1. This comes out to be 16627 pascals. Okay. Can you calculate this? Can you विजुअलाइज कोई ऐसा आंसर हो? यस, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा हमारा आंसर, 16.6 किलो पैस्कल। सिंपल। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? पावर की डेफिनेशन क्या है भाई? वर्क डन पर यूनिट टाइम। डी इज योर आंसर। कुछ सवाल बहुत इजी होते हैं, कुछ सवाल थोड़े से डिफिकल्ट करके देता है एग्जामिनर, सो इट इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। चलो लेट्स रीड आउट क्वेश्चन 16 भाई। 16 में क्या लिखा हुआ है? A model car travels at a velocity of 12 ms minus 1 in a straight horizontal line. The input power to the engine is this. Perfect. This is your input power. The efficiency of the engine is this. What is the total horizontal resistive forces? अच्छा, थोड़ा सा इसको गौर से पढ़ना है। A model car travels at a constant velocity of 12 ms minus 1. That means what? Forward forces is equals to backward forces. Perfect. The input power of the car is this. ये input power है आपकी। ठीक है, आपकी power input is what? 800 volts. Perfect. The efficiency of the engine is this. तो बेटा power output निकाल सकते हो? Yes, you can easily calculate the power output. Efficiency is equals to power output over power input. Efficiency क्या है? 60%, इसको 0.6 कर दो। Power output over power input. पावर इनपुट क्या है बेटा? 800। 0.6 इंटू 800 इज इक्वल टू योर पावर आउटपुट। निकाल लो भाई पावर आउटपुट क्या आता है। 0.6 इंटू 800, दिस कम्स आउट टू बी 480 वोट्स। पावर आउटपुट कम्स आउट टू बी 480 वोट्स। ठीक है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर क्या है भाई? 480। फोर्स आ गई, वेलोसिटी क्या है? 12। कैन यू कैलकुलेट द फोर्स? 480 divided by 12, your force comes out to be 40 newton. B is your answer. Simple as that, nothing complicated. Let's further move ahead. Which represents the principle of conservation of energy? Energy cannot be used faster than it is created. No. The supply's energy is limited, so energy must be conserved. No. The total energy in a closed system is conserved. C is your answer. Let's further move ahead. A barrel of mass 50 kg is loaded onto the back of a trolley 1.6-meter high by pushing it up a frictionless plank 3.4-meter long. Perfect. What is the minimum work done? You have to calculate the minimum work done. How can we calculate the minimum work done? Do we have the weight of the barrel? Yes, weight of the barrel क्या हो जाएगा? Mass into gravitational field strength. Mass is 50, gravitational field strength is 9.8. 50 into 9.81, 9.81. This comes out to be 490.5 Newton is your force. What is the distance traveled in the vertical direction? 1.6. Can you calculate the work done? Yes, work done is equals to force into distance. Force is 490.5. Distance is 1.6 multiplied by 1.6. This comes out to be what? 784.8 joules is your answer. C is your answer. What is the unit of stress? Okay, you have to calculate the unit of stress. Stress is equals to what? Force over area. Perfect. What are the units of force? kg ms minus 2. Beta, what are the units of area? Meter square. If you take meter square into the numerator, it will become kg m minus 1 s minus 2. A is your answer. ऑल क्लियर अप टिल नाउ बेटा? आगे बढ़े। कोई ऐसी चीज़ जो लग रहा हो सर फास्ट जा रहे? चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
Alhamdulillah. Bhai. Chalo, let's see this. The graph shows the relationship between stress and strain for three wires of same linear dimensions but from different materials. Beta different materials का हमेशा whenever you have a stress versus strain graph and different materials is written, this means what? Different. This means what? Different Young's modulus. This means different Young's modulus. Which statements are correct? Okay, which statements are correct? The extension of P is approximately twice that of Q for the same stress. Let's see the extension of P. Let's say this is the stress. If you see here, I think that's correct. Yeah, the extension of P is approximately no Q की extension twice है. The extension of Q is twice. Perfect. The ratio of the Young's modulus for P to that of Q is approximately 2. Yeah, you can say that. Uh, Statement 2 is correct. Why? The ratio of the Young's modulus of P divided by the Young's modulus of Q is 2. Because can you see this is a stress versus strain graph? The gradient of this graph is Young's modulus. Gradient of stress strain graph is equals to your Young's modulus. Can you see P has a higher gradient, so it will have a higher Young's modulus. Q has a lower gradient, so it will have a lower Young's modulus. So yeah, statement 2 seems correct. For strains less than zero point 0.1, for strains less than zero point 0.1, R obeys Hooke's law. I think this is also correct. For a strain less than zero point 0.1, R has a linear line. If you have a linear stress strain graph, then you obey Hooke's law. 2 and 3 both are correct. C is your answer. C is your answer as 2 and 3 both are correct. Let's further move ahead. Let's move on to question 21. Four steel rods equally support an object weighing 10 kilonewton. Okay, so an object weighs what? 10 kilonewton, 10 into 10 is the power of 3 newton. Each rod has a length of this and cross sectional area of this. The weight of the object causes the rods to contract by this. You have to calculate the Young's modulus. Perfect. So first of all, you have to realize that there are four steel rods. So this weight will get equally divided among four steel rods. 10 into 10 is the power of 3 divided by 4. This comes out to be 2.5 into 10 is the power of 3 Newton as your force. You have to calculate the Young's modulus. Young's modulus is equals to what? FL over A. What is force? 2.5 into 10 is the power of 3. What is the length? 2. What is the area? 250 millimeter square. Now, if you want to go from millimeter into meter, बेटा अगर आपको millimeter को meter में convert करना है, what do? Multiply by 10 is the power of minus 3. However, if you want to convert millimeter square into meter square, what do? You multiply it by 10 is the power of minus 3 whole square. That is 10 is the power of minus 6. What will your area be equal to? 250 into 10 is the power of minus 6. Your extension is what? 0.1 millimeter. 0.1 into 10 is the power of minus 3. What will your Young's modulus come out to be? Let's calculate it. 2.5 into 10 is the power of 3 into 2 divided by 250 into 10 is the power of minus 6 into what? 0.1 into 10 is the power of minus 3. This comes out to be what? 2 into 10 is the power of 11. B is your answer. Let's further move ahead. The graph shows the length of a spring varying with force applied to it. Two areas P and Q are marked. Which area represents the work done in stretching the spring? Okay, which area represents the work done in stretching the spring? Okay, what is the work done in stretching a spring? बेटा किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में वर्क डन क्या यूज होता है? यस, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग a spring is what? Work done in stretching a spring is 1 upon 2 into force into extension. This is your line of force. What will be your extension? From the original length to the total length. This is your extension.
And this triangle will be your work done in stretching or extending a spring. A is your answer. The answer to 22 is A. Simple. Let's move on to 23. A horizontal beam of a vertically plane polarized light of amplitude A is incident normally on a polarizing filter. The transmission axis of the filter is at an angle of 50 degrees to the vertical. Perfect. What is the amplitude of the light beam after it has passed through the filter? Always remember, in polarization, you have to remember these two equations. Transmitted amplitude is equals to the initial amplitude cosine theta. This is your first equation that you need to remember in polarization. And the second equation that you need to remember is this. Transmitted intensity is equals to intensity incident cosine square theta. So, these are the two equations that you need to remember for polarization. Okay, let's apply the first equation here because we are discussing the amplitude. We have to calculate the transmitted amplitude. Transmitted amplitude is equals to A naught cosine theta. Perfect. What is theta? 50 degrees. A naught cosine 50. What does your answer come out to be? Cosine of 50 is equals to 0.64. AC is your answer. Simple as that, nothing complicated. Let's move on to question number 24. Let's move on to question number 24. A progressive longitudinal sound wave moves through air. The diagram shows the position of the air particles along the path of the wave at one instant. Point Q is a distance of x from point P. Okay, the distance between point P and Q is x. Which graph shows the variation of the displacement of the air particles with distance from P along the wave? Okay. So you have to tell what is the displacement versus distance graph along the particles P and Q. Along the particles P and Q, you have to tell the displacement versus distance graph. Now for this, you have to understand how a longitudinal wave works. बेटा आपको understand करना पड़ेगा how a longitudinal wave works. Initially, चलो यहाँ, let me write it here. Longitudinal wave. Okay. Let's say initially you have air particles like this. बेटा initially आपके पास air particles हैं like this, 3 and more 3 and more 3. These are your 12 air particles. ठीक है? Now let's say a longitudinal wave passes through it. Let's say a longitudinal wave passes through it. Also, what I can do is, it would be better if I draw it like this. Like this, like this, like this. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव का 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 1 2 3 simple. This is air particles without the longitudinal wave. This is air particles without the longitudinal wave. Now let's say longitudinal wave pass through them. And let's say longitudinal wave pass through them. What will happen? Initially, you will have a compression. In a compression, what happens? Air molecules perform negative displacement. Air molecules perform negative displacement. Okay. So let's say this air molecule will come towards the, or you can say like, or like this. इस तरह कर लो इसको. Initially, what happens is that air molecules perform a compression. Can you realize what has happened? This particle has moved towards the right. This particle has moved towards the left. Perfect. This is a rarefaction. This is a compression. Positive displacement is a rarefaction. Negative displacement is a compression. Okay, let's further move ahead. After a compression, you will again have what? Again a particle that does not move like this. Then, after a compression, you will have a rarefaction again, maximum positive displacement. So it will come here.
Then again, this particle will not move. This will come like here. This will be a compression. Maximum negative displacement. Left side पे आ जाएगा बेटा full. Again, this particle will cause maximum positive or this will stay at this position. This particle will have maximum positive displacement. ये यहाँ पे आ जाएगा. Perfect. This will remain at its position. This will come towards the left because this is a compression. इसको थोड़ा सा वापस समझ लो. Listen carefully what has happened. बेटा let's say this was air. Initially जो first line of particles मैंने बनाई है that I am highlighting in yellow. This is air. Let's say longitudinal waves passes through it. Initially you have a rarefaction. Rarefaction का मतलब होता है maximum positive displacement और maximum displacement towards the right. Perfect. तो आपका ये पार्टिकल राइट साइड पे मूव कर जाएगा. देन यू हैव अ मीन पोजीशन. परफेक्ट. देन यू हैव अ कंप्रेशन. कंप्रेशन का मतलब होता है मैक्सिमम नेगेटिव पोजीशन. तो आपका ये पार्टिकल पूरा लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा. देन यू अगेन हैव अ मीन पोजीशन. द पार्टिकल डज नॉट मूव. देन यू हैव अ रियर फ्रैक्शन. मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स द राइट. देन दिस पार्टिकल डज नॉट मूव अगेन. देन अ कंप्रेशन. पार्टिकल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट. Then again a mean position, again a compression, again a mean position, again a compression. ये बात समझ आई बेटा कि क्या हो रहा है यहाँ पे. डू यू गेट इट कि हाउ डज अ जी सर। लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब अगर आप फोकस करो तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं जो मूव ही नहीं करते. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में देर आर सम पार्टिकल्स दैट डू नॉट मूव. दीज पार्टिकल्स ओके. सो वी हैव टू लुक फॉर अ ग्राफ. अच्छा यहाँ पे कौन से पार्टिकल्स होंगे जो मूव नहीं करेंगे. let's say this is your main position. This is your rear faction. This is your rear faction. This is your main position again. And what else is your main position यहाँ पे. हाँ, some particles don't move here. So initially you have a main position, so you will have a displacement of 0. Then you have a rear faction. Can you see these points are your rear factions? So you will have a maximum positive displacement. Then you have a compression. Compression की negative displacement आ गई. Simple as that. Then again you have a rarefaction. So C is your answer. थोड़ा सा tricky सवाल था ये because not most students know how a longitudinal wave moves. Okay, let's further move ahead. An electromagnetic wave has a frequency of this, which rho gives the principal region of this wave and an example of a wave with a lower frequency. Perfect. So if your frequency is this, you know that the speed of electromagnetic wave is what? P is equals to 3 into 10 is the power of 8 ms minus 1. बेटा आपके पास स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, कैन यू कैलकुलेट द वेवलेंथ. यस, v is equals to f lambda. 3 into 10 is the power of 8 divided by the frequency, that is 3 into 10 is the power of 16. What does your lambda come out to be? Your lambda is the same as the lambda of what? Your lambda is the same as the lambda of ultraviolet rays. And a wave with a lower frequency is visible light. Let's further move ahead. A source of sound emits wave of constant frequency. The source moves at a constant speed in a straight line relative to a stationary observer. Which velocity of the wave gives the smallest observed frequency? बेटा अगर आपने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लेस करनी है दैट मीन्स व्हाट. यू मस्ट बी मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर and the speed at which you are moving away from the observer should be greater. B is your answer. Simple. Let's move ahead. What could describe the time based supply of a cathode ray oscilloscope? The frequency per division on the screen? No. The number of divisions on the screen per unit frequency? No. द टाइम पर डिवीजन ऑन द स्क्रीन. डी इज योर आंसर. सबसे अच्छा आंसर ये आखिर में ही लिखता है ताकि हम थोड़ा सा टाइम वेस्ट करें पढ़ने में. व्हाट हैपेंस व्हेन टू वेव्स सुपर impose at a point. What happens when two waves superpose at a point? Their amplitudes add together, their displacements are added together. I think
Whenever two waves superpose at a point, their displacements are added together. ये कौन सा लॉ था बेटा? लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. दिस वाज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सिंपल एज दैट. सर एम्पलीट्यूड ऐड नहीं होता? नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऐड. देखो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी था अभी. लेकिन मुझे दो. हाँ, थोड़ा सा मैं अगर आपको ऊपर लेके जाऊं तो एम्पलीट्यूड बहुत ही एक स्पेसिफिक टर्म है. एक सेकेंड. कहाँ गई वेव्स की डायग्राम? हाँ बेटा, एम्पलीट्यूड क्या है? देखो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन समझ लो. एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. एम्पलीट्यूड की एक सिंगुलर वैल्यू होती है बेटा. एम्पलीट्यूड अगर 5 सेंटीमीटर है तो वो थ्रू आउट द वेव आपका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर ही रहेगा. बट लेट से अगर आपकी वेव की कोई दूसरा हिस्सा मीट कर रहा हो, तो हेयर द एम्पलीट्यूड्स डोंट ऐड अप, द डिस्प्लेसमेंट्स ऐड अप. एम्पलीट्यूड तो एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर हो गई, वो थ्रू आउट 5 सेंटीमीटर ही रहेगी. वेन एवर यू हैव सुपरपोजिशन योर डिस्प्लेसमेंट्स ऐड अप. और यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ सुपरपोजिशन भी लिखा हुआ है. Whenever two or more waves meet at a common point, the total displacements add up. एम्पलीट्यूड नहीं ऐड होते. ठीक है, समझ आ गया? एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है. An electromagnetic wave is diffracted as it passes through a single slit. The width of the slit is larger than the wavelength of the wave. अच्छा जी, आपकी जो width of the slit है that is larger than the wavelength. ओके, क्या होगा अगर एक डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में आपकी विथ ज़्यादा है देन द वेवलेंथ? योर विथ इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ. व्हाट चेंज विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव? ओके, व्हाट चेंज विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव? अच्छा, हाउ कैन वी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन? Decreasing the efficient frequency of the wave? No. This will increase the wavelength. Wavelength increase होगी तो diffraction ज़्यादा होगी. No, this is wrong. Decreasing the time period of the wave? No. Decreasing the width of the slit? Okay, no. Increasing the wavelength of the wave? Wavelength increase करोगे तो भी आपका काम नहीं होगा. वन थिंग दैट आई कैन थिंक हेयर इज, एक बहुत ऑड सी चीज़ यहाँ पे हुई है, दैट वी कैन कंसिडर टाइम पीरियड हियर. If we decrease the time period, if time period decreases, what will happen? Frequency increases. Frequency increases, lambda reduces. If you decrease your lambda, your diffraction decreases. P is your answer. Let's move ahead. Let's see this. The diagram shows visible light incident on a diffraction grating. Perfect. A pattern of intensity maxima forms on the screen. A line connecting the center of the fourth order intensity maxima with the center of the diffraction grating forms an angle of 53 degree. तो बेटा आपका n क्या हो जाएगा? 4. ओके, एंगल क्या है? 53. एंड द सेंटर ऑफ द लाइन, द ग्रेटिंग स्पेस इज दिस इज योर d. ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट? बेटा इससे आसान सवाल आ नहीं सकता डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का. यू विल से d sin थीटा is equals to n lambda. ओके, आपको ग्रेटिंग कांस्टेंट गिवन है. यस, दैट इज 2.7 into 10 raised to the power of minus 6. 2.7 into 10 raised to the power of minus 6 sine of 53 divided by the number that is 4. लैंडा की वैल्यू निकालो बेटा, क्या आती है? शाबाश, इसको कैलकुलेटर में डालो, बताओ क्या वैल्यू आती है लैंडा की भाई. हम्म, बी। हाँ, बी इज योर आंसर. वेरी गुड. समझ आ रही है बेटा किस तरह किया है मैंने? बहुत इजी. अच्छा, लेट्स सी दिस. A horizontal glass tube closed at one end. अच्छा, a horizontal glass tube closed at one end has a layer of dust laid inside it on its lower side. Sound is emitted from the loudspeaker that is placed near the open end of the tube. The frequency of the sound is varied, and at one frequency, a stationary wave is formed inside the tube so that the dust from walls forms the small heaps.
बेटा ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। आपने सिर्फ सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि जहाँ पे पाउडर अक्यूमुलेट हो रहा है दिस इज योर नोड। जहाँ पे पाउडर अक्यूमुलेट हो रहा है दिस इज योर नोड। द डिस्टेंस बिटवीन फोर हीप्स ऑफ डस्ट इज 30 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड एज वेल, दिस इज द नोड एज वेल। डिस्टेंस क्या है बेटा? हाफ लैंडा। डिस्टेंस क्या है? हाफ लैंडा। डिस्टेंस क्या है? हाफ लैंडा। ठीक है। नाउ 3 over 2 lambda is equals to 30 centimeter. Lambda is equals to what? 20 centimeter. Speed of the sound क्या है? 330. You have to calculate the frequency. बेटा frequency किस तरह आएगी? V is equals to f lambda. V is 330. Frequency हमें नहीं पता. Lambda is 0.2. Can you calculate the frequency? 330 divided by 0.2. Frequency क्या आती है? 330 divided by zero point 0.2. This comes out to be 1650. A is your answer. 31 का आंसर is A. या 31 का आंसर is A. चलो आगे बढ़ते भाई। There is a current in a resistor for a short time interval. ठीक है। Which statement about the total charge that passes through the resistor is correct? There is a current in a resistor for a short time interval. Which statement about the charge is correct? Yes. It can take any value. No. It is an integer multiple of the elementary charge. B is the correct answer. बेटा हमेशा याद रखो, कभी भी आपका जो चार्ज होता है इन अ सर्किट, it is a multiple of this value. The charge in a circuit is a multiple of this value. Perfect. The potential difference V across a filament lamp is slowly increased from 0 to its normal operating value, which graph shows the voltage versus current in the lamp. Okay. ऑलवेज रिमेंबर फॉर अ फिलामेंट लैम्प, बेटा हमेशा फिलामेंट लैम्प के लिए याद रखो योर करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ विल बी लाइक दिस, अ डिक्रीजिंग कर्व। फॉर अ करंट, फॉर अ फिलामेंट लैम्प द करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ विल बी अ डिक्रीजिंग कर्व लाइक दिस, हमेशा। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। एन इलेक्ट्रिक an electric current of 12 ampere very good, what a beautiful question भाई। भाई ये सवाल ऐसा है कि ए स्टार स्टूडेंट्स भी यहाँ पे फंबल करेंगे, थोड़ा सा गौर से देखना। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 12 एम्पेयर इज इन अ वायर ऑफ लेंथ दिस। ओके, आपके पास करंट है, यू हैव द लेंथ एज वेल। द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज दिस, दिस इज योर वेलोसिटी। हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वायर? You have to calculate capital N, that is number of free electrons in the wire. Okay, just by looking at the question, I know one formula that I can apply here. Just by looking at the question, I know one formula that I can apply here. That is current is equals to NAQV. Simple. Current is equals to NAQV. Now, if you realize, beta, what is this N? What is this N? If you remember, this N was what? Number of electrons per unit volume. Okay. How can I represent area? Area is equals to area into length is volume. Area is equals to volume over length. So can I say current is equals to N over V and area is what? V over L into charge Q into velocity V. V cancel out. Simple. You have to calculate what? Number of electrons, that is capital N. Let's make that the subject. Current into length divided by charge into velocity is your number of electrons. What is current? 12. What is length? 0.35. What is the charge? 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 because it is an electron. What is the velocity? 5 into 10 raised to the power of minus 4. Can you calculate the answer? I think the answer comes out to be 5.3 into 10 raised to the power of 22. 5.3 into 10 raised to the power of 22 is your answer। बेटा इस सवाल की समझ आई या नहीं? Tell me. Three resistors are connected to a cell of negligible internal resistance. Which circuit has a combined resistance of 100 ohm? अच्छा, किस सर्किट की combined resistance 100 ohm है? I can see it right from here. ट्राई करना चाहोगे ये सवाल?
Yes, if you analyze option B बेटा, इन दो पैरेलल रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1/100 प्लस 1/100 इज इक्वल्स टू 1/RT. The total resistance of this parallel combination comes out to be 50 ohms. This is 50, this is 50. The total resistance of this combination B is 100 ohms. Let's further move ahead. Each of Kirchhoff's law is a statement based on the conservation of a physical quantity. Which quantity is conserved in each law? In Kirchhoff's first law, what is conserved? Charge. In Kirchhoff's second law, beta kya conserved hai? Energy. Simple. Let's move on to question number 37. A cell with an electromotive force of 1.5 delivers a current of this to a resistance of 5 ohms connected between its terminal. What is the internal resistance of the cell? Perfect. बहुत ही अच्छा सवाल है. Do you remember EMF of a battery is equals to what? EMF of a battery is equals to what? Current into the internal resistance plus the external resistance. EMF क्या है बेटा 1.5, करंट क्या है 0.26, इंटरनल रेजिस्टेंस आई डोंट नो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है 5 या. सो 1.5 डिवाइडेड बाय 2.6 क्या हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 2.6, 0.26 सॉरी, 1.5 divided by 0.26 is equals to R plus 5. This comes out to be what? 5.76. B. हाँ. नहीं, डी होगा. हाँ, डी इज योर आंसर. या डी कह रहे हो तो सही कह रहे हो. डी इज योर आंसर. परफेक्ट. अच्छा, व्हाट इज नॉट अ कॉर्क फ्लेवर. अच्छा भाई, कॉर्क जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं. व्हाट इज नॉट अ कॉर्क फ्लेवर. चार्म कॉर्क इज अ कॉर्क भाई, दिस इज अ कॉर्क. मीजॉन, B. हाँ, मीजॉन इज नॉट अ कॉर्क फ्लेवर. हाउ मेनी डाउन कॉर्क्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन. भाई एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने डाउन कॉर्क्स होते हैं. First of all, you have to realize that down quarks have a charge of what? -1/3e. Perfect. Now, if you realize nucleus of hydrogen किस तरह बना होता है भाई. A nucleus of hydrogen, बेटा न्यूक्लियस में हमेशा न्यूट्रॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटॉन्स. न्यूक्लियस में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं डाल देना, ठीक है. यहाँ पे यू हैव 1 प्रोटॉन एंड 3 - 1 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है. बेटा प्रोटॉन की कॉर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाँ, अप कॉर्क डाउन कॉर्क. न्यूट्रॉन की कॉर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अप कॉर्क डाउन कॉर्क डाउन कॉर्क. सो आपके पास कितने प्रोटॉन हैं, 1. तो एक डाउन कॉर्क यहाँ से आ जाएगा. आपके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 2. एक न्यूट्रॉन में 2 डाउन कॉर्क होते हैं, तो 2 × 2 दैट इज़ 5. ओ सॉरी, 2 × 2 दैट इज़ 4. और टोटल आपका 5 हो जाएगा. 4 + 1 दैट इज़ 5. डी इज़ योर आंसर. Let's look at question number 40. An isotope of boron decays to beryllium by beta positive decay. Perfect. Which particle is emitted in addition to the beta positive particle? बेटा एक चीज मैंने लिखवाई थी बहुत शुरू में लेक्चर्स में, कि हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, बीटा पॉजिटिव के साथ क्या एमिट होता है, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स के साथ एंटी या न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो। न्यूट्रिन. बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स या फिर इन्हें हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, इनके साथ हमेशा न्यूट्रिनो रिलीज होता है, ऑलवेज. और बीटा, बीटा नेगेटिव के साथ एंटी न्यूट्रिनो होते हैं। शाबाश, बीटा नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन. और इसके साथ क्या रिलीज होता है भाई, एंटी न्यूट्रिनो. सिंपल एज दैट. तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम यहाँ पे, सी विल बी योर आंसर. एनी क्वेश्चंस भाई.